Chapter 9, Sending and Receiving Messages. Welcome to today's session, students. I'm your teacher for SST. Let us see what is there in Chapter 9, Receiving and Sending Messages. The growth of science and technology has brought a revolutionary change in the modes of communication, both the verbal and written means of communication. In early times, people used to send messages either by pigeons. तो पहले ज़माने में कबूतरों के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते हैं, ये हम में से सभी कोई जानते हैं। लेकिन आजकल बहुत अलग-अलग तरीके के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आइए वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस के बारे में। आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमारी चिट्ठियाँ आती हैं हमारे पास और हम किसी को अगर चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता है। उसके अलावा हम मनी ऑर्डर्स भेज सकते हैं, टेलीग्राम्स भेज सकते हैं और हमारे देश में अलग-अलग जगह, अलग-अलग शहर पोस्ट ऑफिस के थ्रू जुड़े हुए हैं। So that is one means of communication. Then there is telegraph, which was invented in 1838, and through this, messages could be sent through different parts of the world through codes. कुछ ही घंटों में एक जगह से दूसरे जगह तक सिंपल कोड्स के जरिए मैसेजेस भेजे जा सकते हैं. And then nowadays, telegraph wires have been laid even under sea and ocean to enable us to send telegrams from one continent to other. And basically, किस चीज से dots and dashes के through, these are the codes and symbols for sending telegraph messages. Then we have fax. It is a device जो कि हमारे टेलीफोन से अटैच्ड है और किसी एक पर्टिकुलर जगह से किसी दूसरे शहर तक हम वो मैसेजेस भेज सकते हैं. अगर एक जगह से हम दूसरी जगह पे हमने वो मैसेज भेजा तो जहाँ पे वो मैसेज भेजा गया वहाँ पे एक पेपर पे वो प्रिंट होके आ जाता है एंड दैट इज नोन एज फैक्स मशीन. और इसका जो टेलीफोन लाइन है उसके थ्रू ये कनेक्टिविटी रहती है. उसके बाद अगर हम टेलीफोन की बात करें, हम सभी जानते हैं व्हाट इज टेलीफोन एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 1876, जहाँ पे हम एक शहर से दूसरे शहर तक हम डायरेक्टली किसी भी इंसान से, किसी भी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं. सिर्फ शहर ही नहीं, हम दूसरे कंट्रीज में भी आजकल मोबाइल फोन के थ्रू हम बात कर सकते हैं. दैट इज समथिंग वेरी कॉमन दैट हैज बिकम दीज डेज. Then we have internet. Again, it is a very vast international network and it joins the computer network with the computer line, and underwater telephone cables laid across the sea and oceans link different countries and continents. Email and electronic mail is again a way of sending messages from one place to another through the computers. We then have mass media communication. So basically mass media communication is a means of communication जिसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक हम अपनी बातें पहुंचा सकते हैं. जैसे कि इसमें दिखाया गया है, बताया गया है, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स हमारे कंट्री के भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, किसी एक शहर के भी हो सकते हैं. तो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स में बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और उनके थ्रू अगर हमें किसी को कुछ बताना है, बहुत सारे लोगों को हमें कुछ बताना है, कोई खबर पहुंचानी है, तो वो न्यूज़पेपर में छप के आती है या फिर मैगजीन्स में छप के आता है और वो हम तक पहुंचता है. सो दैट इज नोन एज मास मीडिया एंड थ्रू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ये ऐसी खबर हम तक पहुंचाई जाती है. उसके बाद है रेडियो. रेडियो के थ्रू भी हम बहुत सारे न्यूज़ सुन सकते हैं, रेडियो के थ्रू हम गाने भी सुन सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स दैट हैपेंस ऑन द रेडियो. देन वी हैव टेलीविजन. हम सभी के घर में टेलीविजन है और टेलीविजन के थ्रू हमारे बहुत सारे एंटरटेनमेंट होती है. वी कैन सी मूवीज, वी कैन सी न्यूज़, देयर कैन बी सॉन्ग्स, देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स, प्लस देयर कैन बी न्यूज़. सो लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें कोई कम्युनिकेट करना चाहता है और जब हम बहुत सारे लोगों को हम अपनी विचारधारा या हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो टेलीविजन के थ्रू भी हम बता सकते हैं. Then cinema is another means of mass media communication and it is again basically a source of entertainment. Through short films, documentaries, we learn about real life situations. Then we have advertisements. An effective means of communication with the masses is through advertisements. They give us information about products, and advertisements can be through newspaper, magazines, radio and TV. So basically advertisements और ये जो बाकी means of communication है ये somehow they are connected because advertisement जो है वो अपने आप में पूरा एक शब्द नहीं है, अपने आप में it is a way of communicating, but उसके साथ advertise करने के लिए या तो हमें newspaper की ज़रूरत होगी या हमें magazines की ज़रूरत होगी या फिर maybe radio या television. So that's the means of communication.
Then we have satellite, man-made communication satellites called the artificial satellites, and they have been set up in space to these satellites carry valuable and useful equipments which help us to send and receive messages and pictures from all over the world. Satellites can carry powerful camera which take photographs of the earth, and they can help the meteorologists to predict the weather conditions. So students, what did we study in this particular chapter? The growth of science and technology has brought revolutionary changes in the way of means of communication. Then we have electrograph machine, we have fax, we have telephone, we have internet, we have cinemas and lots of other means through which we can actually communicate. That's all for this chapter, and I will see you in the next chapter. Thank you.